Good morning, students. How are you all? I hope you will be fine and safe at your home. Yesterday we did page number 4. Reading of page number 4, text 1 and text 2. Today we will do the words meaning. Take out your notebook. Mention unit 1 full. Topic is expedition. Then divide your page into 3 parts. First, in first column you will mention the words. In second column you will mention English meaning, and in third column you will mention Urdu meaning. First word we have here expedition. Expedition mean a journey to any place. Expedition mean a journey to any place. उर्दू मीनिंग इसका है मुहिम या सफ़र. एंड सेकेंड वन इज़ क्लिफ. क्लिफ मीन अ स्टीप रॉक. क्लिफ मीन अ स्टीप रॉक. और उर्दू मतलब इसका है, उर्दू मीनिंग इसका है खड़ी चट्टान. एंड द थर्ड वन इज़ बम्पी. बम्पी मीन नॉट स्मूथ. नॉट स्मूथ, ना हमवार. एंड रोड इट्स मीन टू सेल. इट्स मीन टू सेल या उर्दू में इसका मतलब है कश्ती रानी करना या कश्ती चलाना. एंड फिफ्थ वन इज स्लेज, अ टूल टू पुल पीपल और गुड्स अक्रॉस द स्नो और आइस. बर्फ़ गाड़ी इसको उर्दू में कहते हैं. और इसके लिए स्लेज का एक और मतलब भी होता है, वो हथौड़ा. बड़ा हथौड़ा जो है उसके लिए भी, हमर के लिए भी जो है वो स्लेज का वर्ड यूज़ किया जाता है. डिसअपियर मीन टू एस्केप. डिसअपियर टू एस्केप, गायब हो जाना. Next we have here the question on page number 5. Today we will do the questions also, question answers also. This is your unit 1 lesson 3. Page number is 5. Reading to expedition. Read the passage again and answer the question. First question we have here, how many children does Anne have? How many children does Anne have? Anne के कितने बच्चे थे? Anne has 3 children. Anne के 3 बच्चे थे. How did Anne ring her family? Anne ने अपनी फैमिली को किस तरह से कॉल की? Anne rang her family on a satellite phone. Anne ने अपनी फैमिली को सैटेलाइट फ़ोन से कॉल की. How many men walked with Anne and Caroline to the North Pole? एन और कोरोलाइन के साथ नॉर्थ पोल की तरफ कितने लोगों ने सफ़र किया, कितने लोगों ने वॉक की? Nobody walked with Anne and Caroline to the North Pole. किसी ने भी एन और कोरोलाइन के साथ जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ सफ़र नहीं किया. Why did Pom get frost bite? पॉम को क्यों फ्रोस्ट बाइट हुआ? पॉम got frost bite due to cold weather because it was -50 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि वहाँ पर जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था और वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड था. Why could not Pom finish the walk? पॉम ने अपनी वॉक को फिनिश क्यों नहीं किया? पॉम could not finish the walk. पॉम जो है वो अपनी वॉक को फिनिश नहीं कर सकी because she had frost bite on her toe. क्योंकि उसके जो पाँव थे, उसके अंगूठे जो थे वो ज़ख्मी हो चुके थे. How many people completed the journey with Jim? कितने लोगों ने जिम के साथ सफ़र को मुकम्मल किया? Nobody completed the journey with Jim because he traveled alone. क्योंकि उसने अकेले ही सफ़र किया था. Why did Jim wake up one night? जिम जो है वो एक रात को क्यों जाग गया? जिम woke up one night because he heard an engine noise from a huge ship. Question number 8 is, why do you think shark swam around Jim's boat? क्यों आपको लगता है कि शार्क ने जिम की बोट को सर्कल किया या उसके अराउंड उसके गिर्द जमा हुई? डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स. इट इज़ ओपन एंडेड आंसर. Any answer can be accepted. First, I will just give the hint. I think sharks swam around Jim's boat because they were hungry. Next, we have here the pictures. Find words in the text for these pictures. First, you have to observe the picture number 1. This is a kind of stool. It's kind of tool. It is a sledge. It is a sledge. If you can observe the picture number 2, it is ice, and picture number 3 is it's a bed sheet, but it is not smooth. It is
it is bumpy. Next we have here the foot, and foot is injured, it is frostbite. We can use the word frostbite for this picture. And picture number 5, can you observe a man is sailing the boat, a man is sailing the boat, and it is, we can use the word road for from the text for this picture. Picture number 6 is, you can see here big waves, you can see the big waves here. And picture number 7 is, it is a boat but its upper side is in the water, and you can use the word upside down for this from the text. ओके जी क्लास फेयर, दिस इज योर पार्ट नंबर 5. व्हाट अबाउट यू, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद योर पार्टनर. इन क्वेश्चंस को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, अपने साथी के साथ डिस्कस करें. देन शेयर योर आंसर विद द क्लास, और उसके बाद अपने आंसर्स को हमने क्लास के साथ डिस्कस करना. वी हैव द 2 क्वेश्चंस. विच ऑफ 2 एक्सपीडिशंस वुड यू चूज टू गो ऑन? आप इन एक्सपीडिशंस में से किस पे जाना चाहेंगे एंड वाई, और क्यों जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो विद एंड वाई, आप किसके साथ जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? इफ मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 4, वी हैव रेड these 2 expedition yesterday. First was in first we have the 2 character Anne and Coraline, and in second we have Jim, and you have to select into one of 2, and you have to write some 4 and 5 sentences about this. You have here the exemplary sentences. I would choose the first expeditions because I get sick in a boat. वो कह रहे मैं फर्स्ट एक्सपीडिशन को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं बोट में जो है वो मैं बीमार हो जाता हूँ. इन सेकेंड वी हैव हेयर I had liked to go with the Tim because he is strong and would pull the boat sledge. वो कह रहे हैं मैं इस पर्सन को, यहाँ पर उन्होंने रीज़न एक्सप्लेन की है कि मैं इसके साथ जिम के साथ जो है वो जाना चाहूँगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और वो स्लाइड को लेके जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव हेयर आई वुड चूज द सेकेंड एक्सपीडिशन. दिस इज अप टू यू. इफ यू like the first one then you can select the first one. If you like the second you have to select the second. It's up to you, but you have to give the reason. This is very important part of question. This is your page number 6. This is your page number 6, unit 1 lesson 4. Topic is sentences. You have to mention the date, day and class work on each page. First we have here the study corner. Dan has gone shopping. Dan जो है वो shopping के लिए गए. It is present perfect tense. And next we have here I have been filming birds. It is present perfect continuous tense. Next is, if we are talking about this, look and see, talk about the people in the picture. लोगों के बारे में बात करें जो आपको pictures में नज़र आ रहे हैं. We have here a lot of pictures. You have to observe the first pictures, and you have here the just one word under the picture, under each picture, and you have to make the sentences, and the pattern is given. You have to make the sentences with present perfect tense and present perfect continuous tense. First we have here the picture number 1. This is sail. A man is boating. You have to write here he has gone sailing, but you will this activity can be your oral. You can just observe the picture and you can speak it out. What is the person doing? What sentence we can write under the picture. Next we have here the buy fruit. She has been buying fruit. Moving towards next picture, the girl is doing shopping and the word is written shop. She has gone shopping. You can change this. And next word is eat an ice cream. The boy is doing something. The boy is eating ice cream. You can observe the picture easily. He has been eating an ice cream. Next, moving towards, the girl is diving. It is in picture you can see the girl diving and the word is written dive. She has gone diving. Diving mean कहते हैं गोताजनी करना, समुंदर के अंदर गोता लगाना. Dad paint the door. Dad ने पेंटिंग की डोर की. And next you have to write Dad has been painting the door.
Next picture, two girls are doing something in the pictures. Make popcorns. You have to write the girls have been making popcorns in picture. Next picture, the word is written under the picture, that is fly. The two kids are flying. They have been flying. And next picture, football. Play football. The boys have been playing football. Next picture, the two girls are riding. The girls have been gone riding. Next is the balloon. They have gone ballooning. In last picture,